Hi everyone. In this video we'll study about oxidation state. मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, कैसे उसमें रिडक्शन हो रहा है, कैसे उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. बट ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ओके, व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन स्टेट? So oxidation number of an atom in a molecule is defined as the formal charge that atoms appear to have when the electrons are counted according to the following rules. The first rule is electrons shared between two like atoms are divided equally between the two sharing atoms. And the rule 2 is electrons shared between the two unlike atoms are counted with the more electronegative atom. So this means if I am taking two like atoms, that is hydrogen, and if the electrons are shared between these two atoms, so they are forming a covalent bond. Okay, so the electrons are shared through covalent bond formation. So here the electrons are exactly at the center, not at either of the hydrogen atom. When suppose if I consider HCl, so Cl being more electronegative will attract the shared pair of electron toward itself. So chlorine will acquire a partial negative charge and hydrogen will acquire partial positive charge. Okay, -1 and +1. So this charge, this formal charge which is appearing on these two atoms are known as oxidation state. Okay, this is known as oxidation state. So oxidation number of an atom in a molecule is defined as the formal charge that an atoms appear to have when the electrons are counted, and it is according to the following rules, rule 1 and rule 2. Okay, so in rule 1 we are having this counting these. Okay, so here there is no, the electrons are exactly at the center, so no oxidation state, 0 and 0. But for HCl we are having one electron are there near the chlorine atom, so it is having a -1 charge and hydrogen a +1 charge. Okay, so electrons shared between the two unlike atoms are counted with the more electronegative atom, and in this way we get the oxidation state. Applying these two simple rules, we will see that how we work for the determination of oxidation number of an atom. So the oxidation number of all the elements in an elementary or uncombined state is 0. The oxidation number of an element in a monoatomic ion is equal to the charge present on the ion. Suppose if I am talking about fluorine, fluorine will have a -1 charge, chlorine -1 charge. Oxidation number of all the elements in the elementary or uncombined state, like sodium form or hydrogen, it is in combined state, so they have a oxidation state as equal to 0. But monoatomic ion will have a -1 oxidation state. Oxidation number of fluorine in all its compounds is -1. Oxidation number of alkali metals is +1, and for alkaline earth metals is +2. So hydrogen है लीना को रब से फरियाद. Okay, so this is alkali metal. So all these alkali metals will have the +1 oxidation state. Okay, and in the next group for the alkaline earth metals, you can learn beta, mange, car, scooter, ba, razi. Okay, so these all alkaline earth metals will have an oxidation state of +2. Now the oxidation number of oxygen in most of its compounds except the peroxides, the superoxides, the suboxides is -2. So if I am talking about oxidation number of oxygen in water, it is -2 only. But when I talk about peroxides like H2O2, here I am having O2 2-. That means each oxygen atom is having a -1 charge. Now how to determine this oxidation state? Suppose if this is a sharing of electrons. Okay, so I told you that the sharing pair of electrons are counted with the more electronegative atom. जो सबसे ज्यादा electronegative atom है उसके साथ count होगा, तो ये shared pair of electrons इस oxygen के साथ count होगा through one hydrogen atom. तो इसके वजह से ये जो shared pair of electrons जो oxygen की तरफ है, इसकी वजह से इसके ऊपर एक -1 चार्ज आएगा. यहाँ भी shared pair of electron है, इसकी वजह से भी इसके ऊपर एक -1 चार्ज आएगा. तो टोटल इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? -2 आएगा. और हाइड्रोजन के ऊपर +1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के ऊपर +1. इस -1 की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर +1 आया, इस -1 की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर +1 आया. तो यहाँ पे कौन सा रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं? रूल नंबर 2. ओके, अगर H2O2 का देखें तो H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है. ओके,
सो अगेन यहाँ पे शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, यहाँ पे शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला चार्ज हो जाता है -1 एंड यूर ऑल्सो -1। तो यहाँ पे देखो दो सेम एटम है, तो अगेन शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही रहेंगे, ना इसके पास ना इसके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट होगा विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन के ऊपर एक -1 चार्ज आ गया, यहाँ भी एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर +1, यहाँ भी हाइड्रोजन के ऊपर +1। तो यहाँ पे पेरोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आता है। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी कंपाउंड्स में निकालते हैं। सिमिलरली विद Na2O2, BaO2, ठीक है, इन सारे तरीके से ऑक्सीजन स्टेट जो होता है ऑक्सीजन का, उसमें -1 होता है। Now we'll discuss the oxidation number of oxygen in superoxides like KO2. In KO2, the potassium is bonded to oxygen, okay, in this way. This is the bond. So if potassium, we know it is having +1 charge. अगर यहाँ +1 है तो -1 होना चाहिए distribution on both the oxygen atom, इसलिए -12 and -12 both contributes to -1, इसलिए superoxides में ऑक्सीजन के ऊपर -12 चार्ज होता है। Suboxides is C3O2. Like here, the contribution of oxygen is more and carbon में less than, अगर मान लेते हैं इसका +4 या कुछ चार्ज है तो इसमें चार्ज लेस हो जाता है। Suppose if carbon structure I have made like this, C3O2, okay, so यहाँ तो कार्बन का 0, बट यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का +2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है वो, ऑक्सीजन के ऊपर -2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी -2। तो अब इस सेंट्रल कार्बन के ऊपर चार्ज +4 से भी और लेस हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ऑक्सीजन स्टेट अगर निकालेंगे कार्बन पे, ठीक है, तो 2 + 0 + 2 / 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने, 3 है। तो ओवरऑल ऑक्सीजन स्टेट इस कार्बन पे कितना हो जाएगा, +4/3, तो और भी वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सब ऑक्साइड्स, ओके। So, and some exceptions also occur when oxygen is attached to the more electronegative atoms like fluorine. So, when oxygen is attached to more electronegative atoms like fluorine, so यहाँ पे देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ओके। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर मोर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आप किसके पास आएगा, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहाँ पे ये -1, यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसकी वजह से -1, तो -1 को कैंसिल कौन करेगा, +2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट का चार्ज क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम O2F2 देखें, सो दिस इज O2F2, here it is -1, here it is -1, here it is +1, here it is +1, ओके। क्योंकि अगेन शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम के साथ कंट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, तो अगेन ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, +1 होगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करते हैं एलिमेंट्स में। The oxidation number of hydrogen, all of its compounds except the hydrides, it's +1. In hydrides, KH and CH2, the oxidation number of hydrogen is +1. So in all the compounds, the oxidation number of hydrogen in all of its compounds except the hydrides, in leaving the hydrides like HCl, HBr, in all these compounds, the oxidation state of hydrogen is +1. Okay, but in hydrides like KH, here the oxidation state number of hydrogen is -1. Here I have done a mistake, it's not +1, it's -1. K plus H -1, calcium +2, H minus. Okay, so here the oxidation number of hydrogen is -1. Now the algebraic sum of oxidation numbers of all atoms in a neutral molecule is 0. The algebraic sum of oxidation numbers of all atoms in an ion is equal to the charge present on that ion. Okay, whatever the, like suppose carbonate, the overall charge is 2-, so the oxidation state of this ion will be 2-. Okay, and whatever, like suppose in a neutral molecule, if I am talking about H2SO4, so oxidation number of all the atoms, the sum of all, like hydrogen it is having +1, so it's 2 atoms, so I will multiply with 2. Sulfur, suppose here it is having +6 or 2 + x - 8,
Yeah. So it is plus 6 and then it is minus 8 is equal to 0. So 6 plus 2, 8 minus 8 is 0. So that's why the algebraic sum of all the oxidation state of a particular neutral molecule in a compound, it is 0 only.